अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ऑडिट कवर करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम नॉलेजेबल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। टाइप्स ऑफ ऑडिट। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट करने के बहुत से तरीके हैं। एक्सटर्नल ऑडिट। The external audit is performed by the people who are not associated with your business in any way. An external audit can be done by financial institution or government agencies. Auditor must follow the GAAP or generally accepted auditing standards. The outcome of external audit is an audit report that outlines whether the financial information given by your business is accurate or not. When compared to an internal audit, they are more professional because they determine whether the details you shared with the auditor are reliable or not. Lenders can ask for an external audit to be performed. एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट बाहर का ऑडिट होता है, लाइक ये कंपनी के अंदर नहीं होता, कंपनी ने खुद हायर नहीं किया होता। ये जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, लाइक जिनको कंपनी में इंटरेस्ट होता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है, उन सब को हम स्टेक होल्डर्स कहेंगे। पब्लिक भी कंपनी में इंटरेस्टेड होती है क्योंकि कंपनी की प्रोडक्ट खरीदती है। तो ये जो स्टेक होल्डर्स हैं ये एक्सटर्नल ऑडिट करते हैं और चेक करते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही भी है या नहीं। इंटरनल ऑडिट। एन इंटरनल ऑडिट इज परफॉर्म्ड बाय एन इन-हाउस टीम, एन इंडिविजुअल हु वर्क्स इन योर बिजनेस. Internal audit enables you to understand how well your business is doing and whether it is legally compliant or not. It throws light on whether the current business processes are efficient, the state of policy compliance, and assessment of various controls in the business. The audit report is revised by the management, which then gives on to make required changes necessary. Business might have an audit committee that receives the audit report internally. Internal audit. इंटरनल ऑडिट वह ऑडिट होता है जो कंपनी खुद करती है, मतलब कंपनी ने खुद हायर किया होता है, लाइक अपनी डेली की रूटीन्स या एक्टिविटीज़ में एफिशिएंसी लाने के लिए, जैसे उनमें कोई घपला ना करे। लाइक ये जो परचेज डिपार्टमेंट है, इसमें कितनी परचेजेस हुई हैं, 1 लाख रुपया हमने उसे बजट दिया था, उसने 1 लाख रुपए की ही परचेजेस की हैं। सेल्स डिपार्टमेंट में इन्होंने क्या सेल किया है। इन सब डिपार्टमेंट्स को इंटरनल ऑडिट चेक करता है। इंटरनल ऑडिट ये देखता है कि कंपनी के अंदर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो सही हो रही हैं या नहीं। IRS टैक्स ऑडिट। An IRS tax audit is an external audit that investigates whether the tax returns filed by your company are correct or not. A person who isn't connected to your business in any way performs an IRS tax audit. Informs on determining whether the tax payments you made are accurate or not, and whether you have responded everything clearly. There are 3 ways an IRS tax audit can be performed: digitally in your company premises and over the phone. IRS choose itself which business it wants to audit. Just because the IRS conducted a tax audit doesn't guarantee that a business is involved in fraud or misinformation. IRS tax audit. IRS tax audit बेसिकली एक एक्सटर्नल ऑडिट है, क्योंकि IRS टैक्स ऑडिट हमें चेक करके बताता है कि whether your financial information is correct or not. जैसे एक्सटर्नल ऑडिट में स्टेक होल्डर्स आके ऑडिट करते थे, वैसे ही IRS ऑडिट में बाहर के लोग आकर ऑडिट करते हैं और बताते हैं कि पेमेंट्स ठीक से की गई हैं या नहीं, रिपोर्ट क्लियरली है या नहीं। IRS ऑडिट 2 तरह से होती है, एक डिजिटली और एक फ़ोन के ज़रिए। और जो बंदा IRS ऑडिट करता है वो खुद ही चूज़ करता है कि उसे किस तरह की ऑडिट करनी है। Financial audit. Financial audits are one of the common type of audit.
All businesses that are publicly held must conduct financial audit. Financial audit is performed to ensure that the information related to financial statements is correct. Auditors verify the business financial details pertaining to revenues, assets, and expenses. It investigates if recording and reporting have been done justifiably. Financial audits are generally of value to shareholders and investors who can base their decision on final outcome. Financial audit report. CPA firms conduct financial audits. These audits must be conducted by people outside of the business. Financial audit. फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब है लाइक हमने जो भी फाइनेंस से रिलेटेड एंट्रीज की हैं, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट में की हो, बैलेंस शीट में की हो, ट्रायल बैलेंस में की हो, लेजर अकाउंट्स में, यानी जो भी एंट्रीज मनी से रिलेटेड है उन सब को वेरीफाई करना वेदर वो सही है या नहीं, वो फाइनेंशियल ऑडिट कहलाता है। फाइनेंशियल ऑडिटिंग में जनरली इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स होते हैं जो फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट का फाइनल आउटकम देते हैं। ऑपरेशनल ऑडिट. Operational audits are performed to analyze the effectiveness of operating processes of a business. They are generally conducted by the internal team, but some businesses can choose for external team. Operational audit can help uncover inefficiencies and wastage in a business. It determines the effective use of resources to meet business goals and can identify how business operations can improve. Procurement can be subject to an operational audit whereby procurement processes are thoroughly examined and investigated. An operational audit can be conducted to determine the culture and policies of a business. An operational audit can result the cost reduction. Operational audit. ऑपरेशनल ऑडिट बिजनेसेस के ऑपरेशनल प्रोसेसेस की इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए किया जाता है। जनरली ऑपरेशनल ऑडिट को इंटरनल ऑडिटर्स करते हैं, बट कुछ बिजनेसेस ऑपरेशनल ऑडिट को एक्सटर्नल ऑडिटर्स से करवाते हैं। एक्चुअली बिजनेसेस में जो भी कमियां होती हैं उसको दूर करने के लिए ऑपरेशनल ऑडिट किया जाता है। ऑपरेशनल ऑडिट बिजनेस में नए कल्चर और नई पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करता है। कॉम्प्लायंस ऑडिट. कॉम्प्लायंस ऑडिट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑडिट दैट इज कंडक्टेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस and industries where regulation is vital. It checks whether your business is complying with internal or external regulations. Compliance audit can be conducted department-wise. Compliance audits reveal if the business is complying with regulations, such as those for safe working conditions. It takes into account the laws, local regulations, and the standards set by the business. For instance, a manager can ask for compliance audit to be conducted to ensure the workers are adhering to safety guidelines when they are working in a factory. Compliance audit. कॉम्प्लायंस ऑडिट एक ऐसा ऑडिट है जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है टू चेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेदर दे आर एक्यूरेट और नॉट। कॉम्प्लायंस ऑडिट को डिपार्टमेंट वाइज किया जाता है। कॉम्प्लायंस ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ हमें ये बताता है कि कंपनी अपने वर्कर्स की केयर कर रही है या नहीं। लाइक कंपनी का मैनेजर कॉम्प्लायंस ऑडिट करने वाले बंदे से ये पूछ सकता है कि कंपनी का वर्कर सही काम कर रहा है या नहीं, उसके लिए इस फैक्ट्री में सेफ एनवायरनमेंट है या नहीं। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट. An information system audit is performed to verify that your business is using the best security practice so that no external entity such as hacker can get access to business data. It involves checking if the best practices are being utilized by the business to ensure the proper functioning of the IT systems in the business. Information system audit help in the proper evaluation of data processes. It checks that determines the accuracy of data from these systems
Information system audit can reveal improvements such as new software recommendations that can drive the business to do better. It also takes into account backup plans. Information system audit चेक करता है बिजनेस इज यूजिंग बेस्ट सिक्योरिटी, मतलब बाहर से कोई हैकर आकर बिजनेस की पर्सनल डेटा ना चुरा ले। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में बिजनेस के आईटी सिस्टम्स होते हैं। एक्चुअली इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट हमें बताता है कि बिजनेस की पर्सनल डेटा सिक्योर्ड है। पे ऑडिट, अ पे ऑडिट इज रिक्वायर्ड फॉर पे एनालिसिस। Determines whether your business is equally paying people from differently backgrounds and nationalities. A pay audit can find out if unfair practices are part of the businesses, such as different pay rates for people of different genders, ages and races for the same position. Pay audit comprises the pay rates of your business with those that work similarly. The pay audit can be done by a single person or by a team, depending on the size of your business. Pay audit. Audit का मतलब होता है to examine or to investigate whether financial statement is correct or not. तो pay audit ये चेक करता है कि बिजनेस सारे एम्प्लॉयज़ के साथ इक्वली डील कर रही है या नहीं। पे ऑडिट ये इंश्योर करता है कि बिजनेस में किसी भी एज या किसी भी जेंडर को ना देखा जाए, सबसे इक्वली डील किया जाए। पेरोल ऑडिट, अ पेरोल ऑडिट इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑडिट that can usually conducted by internal teams. The HR team may perform the payroll audit. The payroll audit examines and investigates the precision of the information in relation to payroll processing. This includes the wages, employee-related information, tax data, and pay rates. It is a special type of compliance audit that focuses on the payroll. Payroll audit helps businesses spot internal errors that exist. Regular payroll audit can prevent costly mistakes from taking place before other types of audits take place, such as an IRS tax audit. Payroll audit ensures compliance with employment laws. पेरोल ऑडिट ऐसी ऑडिट है जिसको इंटरनल ऑडिटर्स और एचआर टीम कंडक्ट करती है। पेरोल ऑडिट में कंपनी के एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयज़ की टैक्स डेटा, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज एंड वेजेस शामिल होते हैं। हम पीछे कॉम्प्लायंस ऑडिट पढ़ के आए हैं। एक्चुअली पेरोल ऑडिट कॉम्प्लायंस ऑडिट की तरह है। जैसे कॉम्प्लायंस ऑडिट इंटरनली होता है, वैसे ही पेरोल ऑडिट भी इंटरनली होता है।